Sir, I had a visit. Really, it is mind-boggling when I have gone with the Swami was saying. It is really mind-boggling. You just go and see what kind of a arrangement and what kind of a system they have. And conceptualization. I'm really surprised. Now let me come to my own job because there are two other programs also. Sir, I'm taking you to, I've been asked to talk to you about issues in capital. We have been hearing so far that conversion of capital asset into stock and trade is a transfer. I'm starting from there. I'm not taking 45.1, I'm not taking 45.1a. I'm starting from 45.2, will go to 45.3, 45.4, 45.5, 45.5a, where there are certain issues involved in it. The first issue is conversion of capital asset into stock and trade is of course a transfer. But the capital gain does not arise in the year of conversion. The capital gain will arise in the previous year in which that converted asset is sold or otherwise transferred. You have converted shares into stock and trade. You have converted your real estate into stock and trade. When will the capital gain will arise? Not at this stage. It will arise at the previous year in which that converted asset is sold. There may be one asset, there will be so many assets. If you have 10 assets, you have, let's say, 5,000 shares, and you have sold only 1,000 shares, the capital gain will be only for those 1,000 shares and not for 4,000 shares, which will come only whenever those shares are sold. At that time, there will be two types of capital gain, two types of gain. One, of course, is business income. How would you calculate the business income? Sale price, consideration price minus the market value on the date of conversion. Fair market value on the date of conversion is the business income, and fair market value minus the cost of acquisition or index cost of acquisition shall be capital gain. Now, indexation has to be done not till the date of sale. Indexation has to be done till the year of conversion. Indexation till the year of conversion, but capital gain is deferred at a later date whenever that converted asset is sold or otherwise transferred. This everybody knows. I'm taking you now 28.6a. That is putting us a problem. What will happen if you convert capital asset into stock and trade? Oh, sorry, this is what we have done. If you convert stock and trade into capital asset, you had some stock and trade. You are converting that stock and trade into capital asset. When it was stock and trade, there was a business income. When you are going to convert into a capital asset, you want to pay tax at a lesser rate after, of course, index and all that. What will happen at that time when you are converting your stock and trade into capital asset? No question of 45 to 55. It is again section 28. It says fair market value of that asset will be liable to business income. Fair market value will be liable to business income. What is really happening is real estate developers, they develop a commercial building or a commercial space. And later on they think, let us have 2 floors as their own office. Please note what I'm saying. There is a land which is stock in trade. There is a building constructed on the land, and later on they decided that 2 floors of that land, 2 floors of that building will be used by them for their own office. What is this? Conversion of stock in trade into capital asset. There will be a business income there and then. The year in which you have converted that into a capital asset. Please note, what is happening is, khaya piya to kuch nahi. Sirf convert hi to kiya hai. It has been treated as a capital asset. That very day, it will be liable to business income, not capital gain. Business income. And later on, you may claim depreciation on that if it is a depreciable asset or whatever you do. But at this stage, you have done nothing. You have converted your stock and trade into a capital asset. There and then, you are paying tax as a business income. You are paying tax as a business income, and this invariably
we have been doing it. This invariably we have been doing it. The purpose was normally people were converting shares into capital asset. But here, unfortunately, this is applicable to all kinds of stock in trade. The stock in trade is a real estate. Immediately at that particular point of time when it is converted, you will be liable to the business income, fair market value cost, business income. There and then, you may not be able to sell that, or you will treat it as a capital asset. You may claim depreciation, you may not claim depreciation, depends upon the type of the asset it is there. But mind it, you have to pay tax as a business income there and then. This is what is section 45.2. Now, the other way around, reverse side, 28.6. Now, coming to the next section, 45.3. Please listen to this carefully. We are committing mistake of 45.3. At one time, 45.3 was very simple. If any capital asset is brought into the business of partnership firm or AOP, it was treated as transfer. Am I right, sir? Any capital asset is brought into the business of the partnership firm or AOP, it was treated as capital asset. But there it was written, for the purpose of computing capital gain in the hands of the individual who has brought it, for the purpose of computing that gain, the value recorded in the books of account shall be treated as consideration price. यही था ना सर, वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सपोज कीजिए मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है या लैंड है. I have brought this land or a house property as a capital contribution to the firm. Earlier, it was my choice. It is still my choice under 45.3. Suppose the cost of the land is 5 crore. Stamp duty value is 50 crore. I could bring it as a capital contribution at 5 crore, maybe at 3 crore, maybe at 20 crore, maybe at 40 crore. Does not make any difference because the value recorded in the books of account shall be treated as the consideration price. ठीक है सर, value recorded in the books of account, consideration price. So you could avoid tax also by bringing it at the cost price. But mind it, now there is section 56, subsection 2, clause 10, which will be immediately attracted. Prior to 1st for 2017, there was absolutely no problem because section 56.2.10 was not there. It was only applicable for 56.2.7, which was applicable for only individual or HUF. Now, what 56.2.10 says now, on or after 1st April 2017, where any person receives from any other person or persons, any other person or person, any person receives, this person can be individual, HUF, firm, company, AOP, BOI, local authority, anyone. Receive from any other person or person. You may receive from anyone. If he receives a sum of money exceeding 50,000, everybody knows, without consideration, it is income under the other sources. If he receives movable property, it is also either without consideration or for inadequate consideration. The market value minus the price will be taken as the income from other sources. And if you have brought any immovable property into the business of the partnership firm, you could record earlier at what price? At the price you are willing to do that. Now, the firm will be liable because it is receiving an immovable property for inadequate consideration. It is for inadequate consideration. 45.3, there is no problem. But 45.6 clause 56 subsection 2 clause 10 will become applicable in the hands of the firm. Recipient. Who is the recipient of that capital contribution? The firm is the recipient of capital contribution. There and then, it will be taxable. So this is the issue which has to be kept in mind. Don't read only 45.3 in isolation. You have to read 45.3 read with section 56 subsection 2 clause 10.
You may be put into difficulty. It is a different story altogether if it is a rural agricultural land. And rural agricultural land is not a capital asset, so 56(2)(10) is not attracted in the case of rural agricultural land. But if it is any other capital asset, immovable property not being a rural agricultural land, obviously you will be attracting section 56(2)(10), and that will be taxable in the hands of the firm or AOP. Next point, which was brought from assessment year 2021. Section 9B read with section 45(4). A very complicated type of a thing. There is a wire media how to handle that. That is a different story. But section 9B, and then there is section 45(4). Sir, 45(4) will come into picture only when there is a reconstitution. But whenever there is a reconstitution, not only 45(4), 9B will also come into picture. And whenever there is a dissolution, only one section, 9B read with 45(1) or read with 28. I'm again repeating. Section 9B does not only talk about of dissolution, it also talks about of reconstitution. And they have given the meaning of reconstitution. Also, you know that. Because the time is short, I'm not going to do about 9B and 45(4) point by point. But what I'm saying, where it is said, you know, three terminology very important: specified person, specified entity, and of course reconstitution. These three words are very important terminology, very important when you talk about 9B and 45(4). Specified person. Earlier we used to talk about partner of a firm or member of AOP or BOI. They have given that meaning as specified person. Now you given the meaning, specified person means partner of a firm or member of AOP or BOI. And then specified entity is either a firm or AOP or BOI, as the case may be. And third they have defined is reconstitution. Reconstitution means one or more than one partner retire, but the firm continues with the remaining partners. Please, one or more than one partner retire, firm continues. It means the firm which continues will at least have two partners. So if there are three partners, one retire, two may continue. If there are four, one retired, two retired, one minimum two have to continue. Then only it will be called retirement. Or the second is some partner join, some partner retire. That also is reconstitution when the firm continues. And third case is no one retires. No one is admitted. There is a change in the profit sharing ratio amongst the partners, which we have been doing. And we have been doing many things, what you call revaluation of assets, and so many things we were doing because we had a benefit of section 45(4), which used to say dissolution or otherwise. And the otherwise had a lot of litigation problem. I'm coming to now. Very simple. 9B is very simple. 9B says, where a specified person receives from a specified entity any stock in trade or capital asset. He receives any time at the stock in or trade asset in the previous year on account of, in respect of dissolution of the specified entity or reconstitution of the specified entity, it will be deemed to be transfer. It will be deemed to be a transfer, and the specified entity shall be liable to pay tax, number one, in case of inventory, in case of stock in trade, liable to pay tax as business income under section 28 by calculating fair market value minus the cost at 28 section. And for other assets, capital asset, liable to pay tax under which section? 45(1). 45(1), if there is a dissolution or reconstitution or both. Please note, 9B is only a charging section. Tax is not leviable under 9B. It has only said that it is a deemed transfer. And how would you compute capital? How would you compute gain? One under business income, section 28. Another under capital gain, section 45(1). This is only 9B.
So if there is a dissolution, 45.4 does not come into picture at all. I'll come to that. Very simple. Whatever assets are given to the partner, I'm taking the case of a partnership firm, maybe AOP also. Whatever assets are given to the partner, capital asset, you are liable to pay. Who is liable to pay? The firm is liable to pay capital gain tax as if it is sold to some outsider. Dissolution में क्या है? पार्टनर को दे रहे हैं. अब ये सोच के चलिए मैं किसी आउटसाइडर को दे रहा हूँ. So you have to calculate capital gain. And second is, if we have given any stock in trade to that partner, again the firm will be liable to pay tax as business income under section 28 by calculating the capital business income is fair market value on the date of distribution minus the cost of that inventory. Am I right, sir? Minus the cost. 45.4, sorry, if there is a dissolution, we don't have to go further. In the case of dissolution, it is 9B read with 28 and read with 45.1. There is no mention of any money under section 9B. There is no mention of any money under 9B. Please note, it is only the asset and the inventory which you are giving to them. So 9B does not come into picture. If you are giving money to the partner, section 9B read with 28 and 40 will not come into picture. Coming to the next point. But if there is a reconstitution, let's say retirement, first forget 45.4. First forget 45.4. Go to 9B, read with 21.8 and read with 45.1. 28 will come only when I have given at the time of retirement what I have given? Stock. 28 will come when I have given stock at the time of retirement to the retiring partner. If I have not given any stock to the retiring partner, 28 will not be attracted. Second point, have I given any capital asset to him? If yes, section 45 will come into picture. If yes, 45 will come into picture, and you will have to calculate either the short-term capital gain or long-term capital gain, as the case may be. You all know how to compute that capital gain. Absolutely no problem, but if it is capital asset. And suppose third case, I don't give any money. I don't give any stock. I don't give any capital asset. I give money to him, nothing else. Neither 28 nor 45.1 will be applicable. Please note, neither 28 nor 45.1 be applicable अगर मैंने उनको सिर्फ मनी दिया है. लेकिन आपने तीनों चीजें दी हैं. क्या क्या दिया? Stock भी दिया. You have also given capital asset and you have also given money to the retiring partner. In this case, first we will forget 45.4. We'll come to 9B, read with 28 and 45.1. Have we given any stock? Yes. Calculate what you call business income. At the time of distribution, whatever stock I have given to that person, calculate business income in whose hands? In the hands of the firm. Second, have I given any capital asset to him? Yes. If yes, you have calculated capital gain under 45.1. In whose hands? In the hands of the firm. Is this clear, sir? I have not gone to 45.4 yet. I'm still under 9B, 28 and 45.1, thinking that I have given money as well as asset as well as what you call stock in trade to the retiring partner. Clear, sir? तीनों चीजें दी हैं. अगर सिर्फ मनी दी है तो क्या 9B लगेगा, 28 लगेगा, कैपिटल एसेट 45.1 लगेगा? नहीं लगेगा. If I have given only money to the retiring partner, neither 28, first तो 9B नहीं लगेगा, neither 28 nor 45.1. Is simple money is given. If all the three given, first 28 business income, second 45.1 capital gain, and third of course will be 45.4. तो 45.4 कब लगेगा? जब मैं मनी और कैपिटल एसेट दो दूंगा या सिर्फ मनी दूंगा. स्टॉक दिया,
तो भी 45(4) नहीं लगना। Now what is 45(4)? Where a specified person receives any sum of money or capital asset, यहाँ stock in trade नहीं है, receives any sum of money or capital asset in the previous year from the specified person, irrespective of reconstitution of the specified entity, reconstitution किया है, उस केस में अगर कैपिटल गेन ऐसे निकलेगा, A is equal to B plus C minus D. Are you getting my point, sir? A is equal to B plus C minus D. A is capital gain, which can be short term, which can be long term. B is sum of money. Sum of money. C is value of that asset, fair market value of that asset. Minus D, the capital outstanding of that person on the date of retirement. Capital outstanding. सर मेरी एक बात सुनिए, अगर कैपिटल आउटस्टैंडिंग कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं। अगर उसका कैपिटल आउटस्टैंडिंग 5 करोड़ रुपया है तो आप 5 करोड़ से कम दे रहे हैं तीनों बी प्लस सी, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर 5 के बदले मनी और एसेट मिलाकर 4 करोड़ की देंगे, कुछ नहीं, नो लॉस, नथिंग, क्योंकि हम किसको देख रहे हैं, फर्म का एंगल को देखिए, बाकी को मत देखिए। इफ आई हैव गिवन 1 crore money, 3 crore worth of asset, 4 crore capital outstanding is 5 crore, don't think there is a loss or anything, nothing will happen. If I have given him 1 crore capital money and 4 crore capital asset and his value of capital outstanding is 5 crore, there is nothing. But if I am giving more, why I am giving him more? If his capital outstanding is 5 crore and you are paying him more than 5 crore, why are you giving him more than that? He must have said, sir, you have other assets, it has also appreciated, give me the amount of appreciation, my share of appreciation till that date. Will he not ask for it? Because he is going and you have other assets and he is asking for some appreciation of that asset, his share. Or he may say, sir, give me the goodwill. There is a goodwill. Why don't you give me that goodwill amount? And that's why you are giving more to him. Sir, he may say there is an intangible asset. An intangible asset is liable for depreciation. वो depreciate हो रही है, वैसे तो वो appreciate हो रही है। तो मुझे उस intangible asset के लिए भी तो कुछ दीजिए, जो brand name बन गया, जो trade name बन गया, वो भी तो मुझे दीजिए, मेरा share दीजिए। अगर वो मांग रहा है, तो फिर आप दे रहे हैं, उसके ऊपर कैपिटल गेन देना है। इफ यू आर गिविंग मोर देन व्हाट इज हिज वैल्यू ऑफ कैपिटल आउटस्टैंडिंग, अगर तो उतना ही दे रहे हैं, 5 करोड़ कैपिटल आउटस्टैंडिंग है, 5 दे रहे हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके ज्यादा दे रहे हैं तो मुश्किल आएगी। तभी तो लोग उतना ही दे रहे हैं जो उसके बैलेंस है, बाकी कैसे दे रहे हैं वो आपको पता है, मैं ये नहीं जानता। देयर पीपल आर गिविंग हिम द कैपिटल आउटस्टैंडिंग एंड नॉट मोर देन दैट, और उससे लेस देन दैट। और ब्रदर्स में तो रोज होता है, कैपिटल आउटस्टैंडिंग करके दे दो, बाद में गिफ्ट देते रहना, क्या दिक्कत है? गिफ्ट भी तो अलाउड है। वेयर इज द प्रॉब्लम इन दैट? विद अमंग्स द ब्रदर्स एंड अमंग्स द रिलेटिव्स देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ज्यादा देंगे तो आप किस बात का दे रहे हैं? ही इज आस्किंग फॉर गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल, ही इज आस्किंग फॉर एप्रिसिएशन इन द रिमेनिंग एसेट्स which are there in the firm. He is asking for value of intangible asset which is appreciated and you are showing it as written down value. मुझे वो दो, नहीं तो नहीं जाऊंगा। इसी वजह से वो कैपिटल गेन लगा रहे। लेकिन लोगों को तो कैपिटल आउटस्टैंडिंग निकालना ही नहीं आ रहा, इसलिए कहते जो है उतना ही करते। सर कैपिटल आउटस्टैंडिंग कब निकालना है? ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। उसमें क्या क्या लेंगे? ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। Suppose he is retiring on 1st of December. 1st December. So पहले तो करंट ईयर का 9 months का बिजनेस इनकम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? भाई अगर वो 1st of November को दिसंबर को रिटायर हो रहा है, he will be asking for the profit from April to November. Am I right or wrong? तो पहले वो बिजनेस इनकम निकालिए और बिजनेस इनकम निकाल के उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालिए। लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हुए आप उसका टैक्स तो लेंगे, टैक्स का इम्पैक्ट तो लेंगे ना।
This is the share of this is the profit less tax, 40% his share, giving 40. ये उसकी कैपिटल में जुड़ जाएगा. Sir, am I right? Is it clear? Up to the date of retirement, till 30th November, there is a business which is running and there is a profit which is earned by the business, and that profit has to be shared amongst the partners, and his share is, let's say, 40%. So you'll calculate the profit up to that date, and calculate the tax payable on that profit, and the balance will be shared, by 40% will be credited to his account. This is one point. Second point, you have given him, let's say, stock in trade, whose value is 1 crore. Sorry, whose cost is 1 crore. You have given him for 1 crore 10 lakh. 1 crore 10 lakh. So there is a profit to the firm under section 28 to the extent of 10 lakh. Am I right, sir? 10 lakh profit हुआ. ये फर्म को हुआ है, उसको नहीं हुआ. फर्म को 10 लाख है. लेट्स से उस 10 लाख पे 30% ले लेते हैं, बाकी सरचार्ज वगैरह छोड़ देते हैं, टैक्स लगा, तो कितना आया सर? 7 लाख. क्लियर सर? 7 लाख का 40% मांगेगा कि नहीं मांगेगा? एम आई राइट? ही विल आस्क फॉर 7 लाख का 40%, 2,80,000. एम आई राइट सर? दिस विल बी एडेड टू हिज वैल्यू आउटस्टैंडिंग. क्लियर है सर? अभी 2 लिए मैंने. One, profit up to the date of retirement, business income. Another, because we have given inventory and the profit from the inventory is 10 lakh, after paying 30% tax, the balance left is 7 lakh, his share is 40%, so he's asking for 2,80,000, that amount also. And third, he says there was a land there whose cost is 2 crore, whose index value is 3 crore. What is the capital gain? Index cost is 3 crore. वो 2 करोड़ की उसकी कॉस्ट है. कैपिटल गेन कितना हुआ? 2 करोड़ हुआ. 2 करोड़ हुआ सर. लेकिन बिजनेस इनकम कितनी हुई? 2 करोड़ नहीं हुई. 2 करोड़ का 40% नहीं मांगेगा. आप गलत कह रहे हैं. बिजनेस इनकम तो 5 - 2 3 करोड़ हुई. कैपिटल गेन, इसको कैपिटल गेन कहते हैं. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. वहां इंडेक्सेशन थोड़ी अलाउड है. इन अकाउंटेंसी is the indexation allowed? No. So what is the profit of the sale of asset? 3 crore. 5 - 2, not 5 - 3. 5 - 3 is only the capital gain long term, but otherwise the profit is 3 crore. Am I right, sir? उस 3 करोड़ से कहेगा टैक्स निकालो. कितना टैक्स निकालेंगे? 3 करोड़ रुपए पे टैक्स थोड़ी देना है, 2 करोड़ रुपए पे देना है. Am I right, sir? 3 करोड़ रुपए तो प्रॉफिट आया, लेकिन टैक्स तो 5 - 3 2 पर आया, और 2 का टैक्स लेट से 20%. एक एग्जांपल ले रहा हूं. 20% 40 लाख हुआ, तो प्रॉफिट कितना आया? 3 करोड़ - 40 लाख. सर 3 करोड़ - 40 लाख उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, उसकी कैपिटल आउटस्टैंडिंग आए. आर यू फॉलोइंग माय पॉइंट सर? लोग गलती कर जाते हैं, कहते 2 ही करोड़ तो प्रॉफिट है, तो 2 करोड़ का 20% दे दिया, बाकी बांट लेते हैं. प्रॉफिट 2 करोड़ नहीं है. वो इनकम टैक्स का कैपिटल गेन 2 करोड़ है. प्रॉफिट तो 3 करोड़ है सर. 5 crore minus cost 3 crore. Out of 3 crore, you are paying tax not on 3 crore, you are paying tax on 2 crore, let's say 20% 40. So 3 crore minus 40, 2 crore 60 lakh into 40%, 1 crore 44 lakh, he will ask for profit on the sale of asset. मैं ठीक कह रहा हूं सर? 3 चीजें लेगा वो. सपोज उसका 1 अप्रैल को कैपिटल था 2 करोड़. बिजनेस इनकम आ गया 30th नवंबर तक, आफ्टर टैक्स वो ले लेगा. सपोज वो आया 1 करोड़. 2 करोड़ प्लस 1 करोड़ 3 करोड़. एक हमने लिखा था 2,80,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ इन्वेंट्री. वो 2,40,000 वो भी जोड़ दीजिए. 2 लाख कितना था? 80,000. 280 था कितना? आई डोंट रिमेंबर. आप 280 वो जोड़ दीजिए. 2 करोड़ 1 करोड़ 3 करोड़ 280 is the loss. So 3 crore 2,80,000. अब अगला भी तो देखिए 1 crore 44 lakh, वो भी इसमें जोड़िए. सर क्या चीजें जोड़नी है? 4 चीजें जोड़नी है. 1 1 अप्रैल कैपिटल. 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टैक्स अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट. 3 प्रॉफिट ऑन
what he calls inventory, which is given to him after paying tax, which is coming to, I said, 7 lakh into 40, 2 lakh 80,000. And third, share of profit on the sale of asset, which is given to you. That share of profit is 3 crore minus what is called 40 lakh, 2 crore 60 lakh into 40%, 1 crore 44 lakh. ये सब जोड़कर 7 करोड़ आता है. अगर आप 7 करोड़ दे देते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपकी सारी कैलकुलेशन करना जरा हो जाए. आपने 7 करोड़ या उससे कम दिया, हम कुछ नहीं कह रहे. 7 करोड़ से ज़्यादा क्यों दिया? कारण यही है, आपने उसको कोई एप्रिसिएशन दी. किसकी? एसेट की. आपने उसको गुडविल दी, आपने वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट दी, उसके ऊपर टैक्स आज दे दो. कौन देगा? फर्म. सपोज मैंने उसको 8 करोड़ दिया, 8 माइनस 7 कैपिटल गेन 1 करोड़. इसमें भी देखना पड़ेगा शॉर्ट है कि लॉन्ग है. शॉर्ट है कि लॉन्ग है. अगर गुडविल की वजह से दिया, ऑलवेज शॉर्ट. अगर इंटेंजिबल एसेट के लिए दिया, ऑलवेज शॉर्ट, बिकॉज वो डेप्रिशिएबल एसेट है. लेकिन कोई लैंड की वजह दिया और वो लॉन्ग टर्म है, तो वो कौन सा माना जाएगा? लॉन्ग. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कैपिटल गेन पे टैक्स कौन देगा? फर्म. सर आपने टैक्स तो दे दिया आज, लेकिन अर्न तो किया नहीं है. आई हैव नॉट अर्नड द प्रॉफिट, बट यू हैव टू पे टैक्स टुडे. The law says there is section 48, clause 3I, where this amount which you have given to him can be apportioned to the various assets for which appreciation has been given. But that apportionment will be only when you sell that asset. Otherwise, no depreciation will be allowed on that asset कि जी उसको operational cost बढ़ा दो और उसके ऊपर depreciation. No, no, no question. जो depreciation लेना है, उसी asset से लेना है. कोई भी और चीज़ चलना है, अगर वही लेंगे. लेकिन जब भी वो एसेट बेचोगे, which may be land, which may be intangible asset, which may be goodwill, at that particular time, when you deduct cost of acquisition and cost of improvement, any expenses of the transfer, also deduct that amount which has been apportioned, amount of cap tax on which you have apportioned on that asset, वो निकाल कर कैपिटल गेन निकाल. ये समझ में आया सर? इतना आसान नहीं है. I have tried to make it as simple as I could it. लेकिन हमें तो बड़ा आसान काम आता है. हम देते ही उतने जितना उसका कैपिटल है, उससे ज़्यादा देते ही नहीं है. लेकिन कैपिटल निकालने के वक्त भी याद रखिए कि वो कैपिटल गेन कैसे, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गेन कैसे निकालना है. इट इज़ नॉट ओनली ऑन 2 करोड़, इट इज़ ऑन 3 करोड़ माइनस. क्लियर है सर? दिस इज व्हाट इज. ये 45 तब आएगा व्हेन यू पे मोर देन व्हाट इज ड्यू. और ये भी हो सकता है आप सिर्फ मनी देते हैं. यू आर पेइंग ओनली मनी टू हिम. हिज मनी ड्यू इज 7 करोड़, यू आर पेइंग 8 करोड़. क्या 9 भी आएगा? 28 नहीं आएगा. 45 1 आएगा? नहीं आएगा. सिर्फ एक ही आएगा. 45 4. 8 माइनस 7 1 करोड़. बस फर्म ने टैक्स दे दिया. ये 1 करोड़ कैन बी एट्रीब्यूटेड, इट कैन बी अपोर्शन टू द एसेट्स for which the appreciation of 40% has been given. Concept समझ में आ गया सर? I wanted to explain you the concept which is very important. The concept को अगर जाके रखेंगे तो दिमाग में ये नहीं लगेगा कि ये क्या कर दिया है. जो किया है ठीक ही किया है, लेकिन मर गया मैं, क्योंकि मैंने सजेशन कुछ और दी थी, उन्होंने कुछ और कर दिया है. I can't help it. मेरे को सब क्रिटिसाइज करते हैं आजकल कि यही करवाते हैं. मैं करवाता नहीं सर. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, व्हेन वी वर रीड्राफ्टिंग द लॉ, हमें कई चीज़ें देखा कहाँ लूप होल थे. वी वांटेड टू डिस्कस दैट एंड गिव द रिलीफ और वॉट एवर इफ इट वाज चार्जेबल. हमने टैक्स लगाने की कोशिश की और बेनिफिट भी देने की कोशिश की. उन्होंने टैक्स तो लगा दिया, बेनिफिट एक भी नहीं दिया, क्योंकि वो बजट आया ही नहीं उसके बाद. हमने रीड्राफ्ट एक्ट दिया है. You know how many sections we have in this income tax act? कोई बता सकता है? How many sections? Existing income tax act. लोग कहेंगे 298 सेक्शन है. ये बिल्कुल गलत है. 298 नहीं है, more than 500 सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में. More than 5. आप कहेंगे 298 लिखा है. सर 28 to 44 is for business, 45 to 55 is for capital gain, 22 to 27 is house property. If you want to introduce any amendment in section in business chapter, how will you do it? 44 capital A, ये separate section है. 44 capital double A,
ये सेपरेट सेक्शन है। 44AB ये सेपरेट सेक्शन है। 44AD ये सेपरेट सेक्शन है। 44ADA, क्योंकि AD के बाद A ही कर दिया था, बाद में आप लोगों के लिए लाना था तो कहाँ डाला, ADA। जितने भी कैपिटल है वो सेपरेट सेक्शंस हैं। 44AD AE, 44B, 44BB, 44BBA, 44BBB, 44D, 44D, 44DDA, ये सारे सेक्शंस हैं सर। 35 कैपिटल A, 35AB, 35AC, 35AD, ये सारे सेक्शन हैं। 500 से ज़्यादा सेक्शंस हैं इनकम टैक्स में। उसके नीचे सब सेक्शंस भी हैं, उसके नीचे क्लॉजेस भी हैं, उसके अभी प्रोवाइसो पे पहुंच जाते हैं। अभी तक प्रोवाइस क्लॉज में आए हैं, उसके नीचे सब क्लॉज भी हैं, उसके नीचे प्रोवाइसो नहीं है, उसके नीचे आइटम है, आइटम के नीचे सब आइटम है। समझ में आया? सेक्शन जब लिखा जाता है तो सब सेक्शन किसकी बात करता है, सेक्शन की। क्लॉज किसकी बात करता है, सब सेक्शन की। सब क्लॉज किसकी बात करता है, क्लॉज की। आइटम किसकी बात करता है, सब क्लॉज की। सब आइटम किसकी बात करता है, आइटम की। फिर उसके बाद भी थक नहीं जाते। प्रोवाइडेड दैट, है ना सर, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। जब भी प्रोवाइडेड दैट लिखो हो ना तो दिस इज फर्स्ट प्रोवाइसो, और जब भी प्रोवाइडेड फर्दर लिखा हो कहीं भी देख लेना, इट इज सेकंड प्रोवाइसो। उसके बाद आपको गया 1023C सेक्शन, आज बात हो रही थी। 23 प्रोवाइसो हैं सर उसमें, 23 प्रोवाइसो, और आपको लिखा 14 प्रोवाइसो। देखिए 14th प्रोवाइसो कैसे देखेंगे, क्योंकि उसके बाद क्या है, 1 का पता है मुझे, प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट प्रोवाइसो। 2 का पता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। उसके बाद क्या होता है, प्रोवाइडेड आल्सो दैट। ये 3 हुआ। फिर लिखते हैं प्रोवाइडेड आल्सो दैट, फिर लिखते हैं प्रोवाइडेड, जितने मर्जी आल्सो डालकर लिख लो 23 प्रोवाइसो। जैसे आई थैंक बिशन शाह, आई थैंक प्रजापति जी, आई ऑल्सो थैंक, कीप ऑन एडिंग ऑल्सो। वो भी वहां 23 बार थैंक कर दिया उन्होंने, 23 प्रोवाइसो। फिर भी कहां कंप्लीट होता है, आपको पता ही है, एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन थे 1 2 3, अब तो 1A 1B 2 3 4। मिशन जी फुल स्टॉप ढूंढते हैं 6 लाइनों के बाद तो कॉमा आता है। ये हमारा लॉ है सर। हमने इसका प्रोवाइसो सारे खत्म कर दिए थे, एक्सप्लेनेशन रखी थी, प्रोवाइसो सारे खत्म कर दिए थे, और सिर्फ 260 सेक्शन डाले थे इन द होल इनकम टैक्स एक्ट। क्या करें, नहीं आया, क्योंकि उनको वही पसंद है, तो जो करें। अब मैं नहीं चाहता, जेटली जी ना जाते तो शायद आ जाता, बाकी मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। लेकिन वो भी मैं बता दूं, मैंने बिशन जी को कहा, वैसे जीएसटी के एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैंने कहा आप भी इनकम टैक्स का एक एक सेक्शन रोज पढ़ लिया। सर समझ में आता नहीं क्या पढ़ना है। मैंने नहीं पढ़ लिया करो एक सेक्शन। कहते आप कहते तो पढ़ लेता हूँ। मैं एक सेक्शन पढ़कर 3 घंटे बाद टेलीफोन आया, सर मैंने क्या हुआ, सर एक सेक्शन पढ़ा 3 घंटे लग गए। मैं कोई बात नहीं, एक पढ़ तो लिया है। कहता सुन तो लो सर, उसमें लास्ट में लिखा था इट इज नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2010-11। सर हमें तो ये भी नहीं पता कि वो सेक्शन एप्लीकेबल है। आपको पता है? किसी को नहीं पता है। तभी मैंने कहा आगे से सोच लेना, या तो लास्ट लाइन पढ़ना या फर्स्ट लाइन पढ़ना, पता लग जाएगा कि एप्लीकेबल है कि नहीं। हमें नहीं पता है। दिस इज अवर लॉ। What is so complicated law what I am trying to explain। मैं क्यों आ रहा हूँ, एक और बीमारी डाल दी। मैं 45(5) में नहीं आ रहा, वो कंपल्सरी एक्विजिशन को छोड़िए। एक 45(5)(a), मुझे टाइम बता दो सर, मैं बोलता रहता हूँ, ये मेरी टाइम बता दो, उसी हिसाब से चलो। 5 मिनट बस, सिर्फ 45(5)(a) करके छोड़ दो, दे दिए 5 मिनट। हैं सर, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, तो आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ रहे हैं 45(4) की। मैं वही पॉइंट समझना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। वो 45(4) के ऊपर जो जजमेंट आई, अब क्या वो लॉ है? अब तो लॉ बदल गया ना। वो पुराने जजमेंट के लिए कहा गया कि अगर आपने उसको एक्सेस अमाउंट किया तो 45(4) में, क्योंकि डिसोल्यूशन और अदरवाइज था, अदरवाइज का मीनिंग उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। बट अब हमें क्या करना, अब तो है ही गया वो। पुरानी चीजें तो सुपारकर साहब देखें, मैं क्यों देखूं? आप समझ गए ना मेरी बात? लिटिगेशन इन्होंने करना, ये बैठे हुए हैं मित्तल साहब, ये लिटिगेशन वाले हैं। मैं लिटिगेशन नहीं करता, मैं तो सिर्फ अच्छी बात बताता हूं। ये कर लो, जान छूट जाएगी, नहीं तो बाद में फंसते रहोगे।
क्लियर? सो वो जो आपने जजमेंट बताई ना, वो जजमेंट पुराने लॉ की है, प्रायर टू 2021। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 20 साल बाद आती है, अब तो लॉ ही बदल गया है, तो उस जजमेंट को क्या करें हम? लॉ ही बदल गया, तो वो नए के लिए नहीं है। हम आज की बात करते हैं, पुरानी बातें डिफरेंट है। So there is absolutely no need to do that, but that is related to 45(4). If somebody has taken the benefit there, in the case of that this is not applicable for, except dissolution, it is not applicable, he is mistaken. Now it is covered. एक और चीज बता दूं सर, बहुत ध्यान से ये जरूर ध्यान रखना, ये सक्सेशन प्लानिंग की बात है, बहुत ध्यान। कई बार दो पार्टनर होते हैं दो पार्टनर, और वहां लिख दिया जाता है पार्टनरशिप डीड में दैट, वो सक्सेशन लिख दिया जाता है, इफ ए पार्टनर डाइज his legal heir will be taken as a partner. यही लिखा जाता है सर, नॉर्मली सक्सेशन प्लानिंग में ये लिखा जाता है, उसका सन विल बी टेकन एज ए पार्टनर, इज वट एवर मे बी, हिज लीगल हेयर विल बी टेकन एज ए पार्टनर, ये लिखा जाता है। सर दो आदमी में लिखा जाएगा ना, तो ये डिसोल्यूशन हो जाएगा, ये मैं पहले बता दूं। डेथ के बाद ही तो एडमिट किया है, डेथ से पहले तो एडमिट नहीं किया। सो डेथ हो गई तो उसी दिन क्या हो गया? डिसोल्यूशन हो गया। देयर इज ओनली वन पार्टनर। You can't have a partnership with only one partner. He will come into the step to the father only after the. So आपके पास जितनी भी पार्टनरशिप डीड है ना, सबको कम से कम 3 कर लीजिए, फिर दिक्कत नहीं होगी। कम से कम 3 कर लीजिए। अगर किसी की डेथ भी हो गई तो 2 तो बचे हुए हैं ना, तो उसको डिसोल्यूशन नहीं कहेंगे। अदरवाइज अगर डिसोल्यूशन कहेंगे तो आपको सीधा 28 and 45(1) लग जाएगा। Am I right? सर एक पार्टनर रह गया तो वो डिसोल्यूशन है, ये डिसीजन ऑलरेडी है सुप्रीम कोर्ट। सो यू शुड हैव मोर देन 2 पार्टनर, एंड यू मे राइट ए क्लॉज दैट इफ सम पार्टनर डाइज, हिज लीगल हेयर विल बी टेकन एज द पार्टनर, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। 2 पार्टनर्स आर ऑलरेडी देयर, 1 इज एडमिटेड, नो प्रॉब्लम। और दूसरा, कोई एक बड़े गलत लोग बोल रहे हैं कि एडमिशन के टाइम पर भी सेक्शन लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, और रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। सपोज करिए हम पार्टनरशिप में रोज करते हैं, मैं पार्टनर हूं, मैं एक छोटे जूनियर को ले लेता, भैया मेरा 90%, तेरा 10%, करते हैं ना सर। फिर उसके बाद हम बदल लेते हैं, 50-50 कर लो, 40-60 कर लो। अगर मैंने उसको कोई पैसा दिया और लिया नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो क्वेश्चन ऑफ एनीथिंग। इफ आई चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट आई हैव नॉट पेड एनी पेनी, प्लीज नॉट, नथिंग विल हैपन, और आई हैव नॉट टेकन एनी पेनी, नथिंग विल हैपन। क्योंकि फर्म को क्या फर्क पड़ा, टैक्स किसने देना है? फर्म। आप 90-10 कर लो, 10-90 कर लो, 40-60 कर लो, वो तो आपस में है ना, वो तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको जो मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है। ऊपर वाला तो फर्म को तो टैक्स ले ही लिया है ना उसने। अब 90-10 बांटो या 60-40 बांटो, उनको क्या फर्क पड़ता है? सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन कीप ऑन चेंजिंग द पार्टनरशिप डीड इफ यू डू नॉट टेक ए पेनी on account of reconstitution where the profit sharing ratio is changed. There is absolutely no problem, there will be no tax at all. और इसी तरह कोई पार्टनर आया, चाहे 10,000 रुपये लेके आया, 10 करोड़ रुपया लेके आया, आपने उसको कितना भी रेशियो ऑफ प्रॉफिट दे दिया, doesn't make any difference, does not make any difference। वो 10,000 ले आया, 10 करोड़ ले आया, उसको 50% दिया, 40 दिया, 1 दिया, 20 दिया, no difference। Why? It is the firm which pays tax, not the partner। Are you getting my point? This also is very important. I wanted to say, last है डेवलपमेंट एग्रीमेंट, हमने कई बार किया है, अभी अलाउ नहीं करेंगे उसको करने का क्योंकि मैं इसमें रह गया। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट हियरिंग। थैंक यू। Thank you, sir. It's always a knowledge enriching listening to you. At the outset, I would like to thank sir for accepting our invitation to be part of this historical once-in-a-lifetime event. Sir, your kind presence has made this auspicious place and auspicious day more special for the Ahmedabad branch of WIRC of ICAI. Sir, we are again looking forward for your valuable mentorship to the Chartered Accountant students at CA National Students, sir. Yes, and needless to say, for the budget dissecting section and the budget analysis session in the coming February month. Sir, we are always pleasure to have your kind presence, and it's always a knowledge enriching.